MOT of any given molecule, two things are required. One is basically what are the peripheral atom and what is the central atom, right? For example, if I would say that I am taking a molecule H2O right here. So in H2O molecule, which is the central atom? Oxygen, right? And what is the peripheral atom? That is H2. So to construct the MOT, what you should focus is, first you should try to make the MOT for H2, or you should make the orbital diagram for H2, and then you should try to combine with oxygen atom. Okay. For example, suppose I will ask that, okay, you try to make MOT for AB3. So what is your first duty? Your first duty is to think about the Salk equation or the depiction for B3 molecule. Okay. And that moment of time, you considered as a dummy atom. And the moment you are ready with B3, then you try to combine with A. Okay. So here in H2O molecule, as I told you, there are the central atom is oxygen, and the remaining atom which are going to so-called constructing the peripheral atoms are H2. So first H2 is having only two possibility. एक क्या होगा, सपोज करिए मैं इसको ड्रा करता हूं, एक H का ये है वेव फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन, एक का ये, तो दूसरे का क्या होगा, अगर मतलब जनरल है, इट्स जस्ट इफ आई वांट टू नो दैट व्हाट वुड बी द साल्क इक्वेशन फॉर द सेकंड, this is bonding, then of course one atom should be in opposite phase, right? ये देखिए हो गया opposite, है ना, इसे शेडेड एरिया में कर दिया, right? तो एक where we are using the unshaded portion, and the second one is where one is shaded and another is unshaded. यहाँ पर मैंने देखिए डिपिक्शन दिखाया है, I will prefer red and first. Wait a minute. छोड़िए, सी यहां पर मैंने क्या किया, फॉर ऑल द हाइड्रोजन बोथ द एटम्स आर इन द सेम फेज, बट हियर वन एट बोथ द एटम्स आर इन अपोजिट फेज, राइट? दिस इज सिमेट्रिकल विद 2s ऑर्बिटल, राइट? एंड 2s ऑर्बिटल्स को नेमिंग दिया है A1, राइट? द सेकेंड इज which is out of phase, we are depicting towards 2py and the label is at B2. Again 2pz, if you will remember, 2pz and s are the orbitals which are involved in the sigma bonding. अभी आपको ये तो पता ही है कि H2O में sigma bonding है, so you should know that which orbitals are going to be involved. Of course it will be s and pz. For s it should be wave function which should be symmetrical, similarly for pz also. So what we are trying to depict, for both we are trying to depict the same one, right? But for remaining one we are taking the second option, that will be anti-bonding, it will be higher energy. And now you will try to correlate with the central atom. सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में आपको याद होगा, आपने जब सॉल्व किया था तो आपको लेवल आया था A1 B1 B2 A1, राइट? नाउ अगर ऑक्सीजन का S से मैं कंबाइन करूं इसको, तो S इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, दैट इज स्फेरिकल, राइट? अब देखिए इसको मैं इससे कंबाइन करूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे क्या मिलने वाला है, दिस वन, राइट? अब दैट इज अ बॉन्डिंग, मैंने आपको पहले ही दिन बताया जितने भी ऑर्बिटल मिलेंगे या मिक्स होंगे, सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म. Here this whole will be act as one, and one is going to be come from oxygen. So how many orbitals are going to be overlapped? Two orbitals are going to be overlapped. So it means two orbitals are going to get from, one is a bonding and another is a anti bonding. तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक दूसरा कलर से सेट कर दिया, यानी ये इसके रिस्पेक्ट में एंटी बॉन्डिंग होगा. Now see the second possibility is 2px, राइट? अब देखिए ऑक्सीजन में तो ये है, बट 2px का डिपिक्शन यहाँ पर मैंने कुछ भी नोट नहीं किया, यानी ये कैसे एक्ट करेंगे, नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में. इसीलिए यहाँ पर देखिए द ओनली आई हैव शोन द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2px. ये पोजीशंस और ये पोजीशंस क्या है, ब्लैंक है, बराबर है ना? तो 2px इज गोइंग टू बी नॉन बॉन्डिंग, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी एटम रहेगा
उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग, और जब नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग। अभी देखिए पीजेड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अगेन इट इज A1, राइट? तो पीजेड तो ऑक्सीजन में भी है। नाउ सी इन व्हाट वे इट कैन बी, इफ यू विल सी दिस वे, दे ऑल आर बॉन्डिंग, राइट? अगर उल्टा देखिए तो फिर से ऐसे है। लेकिन अभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप इस प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी अ पार्ट which is not shaded. This one is not shaded, this one is not shaded, this one is not shaded. Now why it is anti-bonding? Because you have to see in the similar fashion. So if you will move from this direction, what is going to become? This is unshaded, this is shaded, again it is unshaded. So that's why it is non-bonding, it is anti-bonding. Okay, don't be think कि एक बार ये ले लिया, ऊपर से ले लिया, और एक बार इसको नीचे से ले ले रहे, right? This way it is going to be wrong. Always focus in a one prospect, whether you are opting in the lower directions or you are going to opt in a upper direction. अब चलिए इसका MOT बनाते हैं, राइट? अब देखिए, always think that ligand system, or you can say the peripheral system, used to prefer on the left hand side, but it's not compulsory always. Okay, it sometimes it depends. Here I have taken the left part for H, and the right part we have taken for O. Here you should focus that these orbitals of oxygens are in a lower energy with respect to hydrogen. देखिए P का अगर मैं लेवल खींचूं तो P का लेवल देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का 1s हायर एनर्जी में है विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन के 2p, तो ऑक्सीजन का 2s तो और डीपली रहेगा, ये देखिए और नीचे है, राइट? ये एनर्जी लेवल समझ लीजिएगा, एनर्जी का पैटर्न यहां से यहां जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? अब यानी ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। नाउ सी ऑक्सीजन ऑर्बिटल्स आर हैविंग अ लोअर एनर्जी, right? Why? Because oxygen is more electronegative, right? So they will prefer the lower side of energy channel. Now here it will be 2p, here it is 2s. आपको अभी अभी मैंने बताया आपको कैसे बनाना है MOT. ऑलवेज रिमेंबर पेरिफेरल एटम पे फोकस करिए। पेरिफेरल एटम यहाँ पर क्या है, H2, तो आप पहले H2 का चाहे तो साल की क्वेश्चन या डिपिक्शन बना लीजिए। मैंने आपको समझाया कि H2 की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, H2 की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकती है बॉन्डिंग और एक हो सकती है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, इसको बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या दिखाया, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एंटी बॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। और यहाँ पर मैंने इसको बॉन्डिंग दिखाया बिकॉज दे आर इन फेज, राइट? नाउ अनदर थिंग इज दैट वी विल ट्राई टू कंबाइन विद द सेंट्रल एटम। अभी देखिए 2s के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पर है नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बिकम एज इट इज। अब 2p में आ जाते हैं। 2p में तीन तरीके के ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz। और आपको पता है 2pz इज द ओनली ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इन अ सिग्मा बॉन्डिंग। सो सिग्मा बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में हम अब लिगेंड की तरफ देखेंगे या H2 की तरफ देखेंगे या पेरिफेरल एटम की तरफ देखेंगे। तो पेरिफेरल एटम तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो ओनली अवेलेबल ऑर्बिटल विल बी s। नाउ s इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद pz ऑर्बिटल। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, देखिए S में भी कौन सा, S में भी वो ऑर्बिटल जो हाईली सिमेट्रिकल है, यानी ये वाला, ये किससे कंबाइन करने जा रहा है, ये यहाँ के 2pz से कंबाइन करने जा रहा है, और हमने उसे बॉन्डिंग दिखाया। अब ये अगर बॉन्डिंग बनेगा तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनना चाहिए। देखिए यहां से मैंने इसको लिया, ये हुआ बॉन्डिंग। देखिए मैं फिर से प्लॉट करता हूं, दिस वन इज बॉन्डिंग। अब इसके रिस्पेक्ट में फिर इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, बराबर है ना? तो 2a1 का एंटी बॉन्डिंग मैंने ये 3a1 सबसे ऊपर बनाया है। देखिए यहाँ पर a1 लिखा है, वहां पर 3a1 स्टार लिखा है। स्टार विल करस्पॉन्ड टू द एंटी बॉन्डिंग नेचर एंड a1 विल करस्पॉन्ड, जहां पे स्टार नहीं लिखा है वो बॉन्डिंग कैटन। तो देखिए दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, ये और ये, तो इन्होंने दो ऑर्बिटल बनाए, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, H2 का जो एंटी बॉन्डिंग है, राइट, वो भी पीजेड से मिक्स हो सकता है, मैंने आपको लास्ट में दिखाया था। और उसमें क्या बन रहा था, एक पॉसिबिलिटी बॉन्डिंग की थी और एक पॉसिबिलिटी नॉन बॉन्डिंग की थी। तो देखिए यहां पर वो 1b2 के फॉर्म में जुड़ रहा है, ये देखो, राइट, ये देखिए, तो b2 के रिस्पेक्ट में ये एंटी बॉन्डिंग आ गया। अभी एक ऑर्बिटल जो 1b1 है ऑक्सीजन का, वो रिमेन अनचेंज कह लीजिए, या नॉट एबल टू कनेक्ट विद एनी एटम ऑफ हाइड्रोजन। इन दैट केस इट विल बी एक्ट एज नॉन बॉन्डिंग,
right? See, always remember two important things for constructing the MOT diagram. One is the energy level and another is the combining of orbitals with the same symmetry, राइट. एस एस से प्रिफर करेगा, एस पीजेड से प्रिफर करेगा, बट एस कभी भी पीएक्स या पीवाई से प्रिफर नहीं करेगा. सो ऑलवेज जस्ट फोकस. द मोमेंट यू आर एबल टू नो टू कंस्ट्रक्ट द साल्क, एमओटी इज वेरी इजी. Is that okay? Now, if I will ask what is the bond order, you know that the bond order formula 1 by 2 Nb minus Na, and that is called the electron present in a bonding minus electron present in a anti-bonding divided by 2. Now, if I will see here, how many electrons are present in a bonding? See, this is 4. 2 here, 2 here. So total orbital will be 4. And how many electrons are present in anti-bonding? If you will see, it is 0. So the formula will be 1 by 2 4 minus 0. So what you can write? This is 4 by 2. So the bond order will be 2. This way we are able to calculate the bond order, right? Otherwise, yaad rakhega, the number of sigma bond usually correspond to the bond order. In case of normal atoms, coordination chemistry में ऐसा नहीं होता. Anyway, so I hope this much will be clear. Now we will move towards a higher one. See, so far you have discussed that H2O is having the point group C2V. Is that okay? Agreed. But suppose if someone is claiming that no, H2O can be d infinite H, then it is also possible to explain that d infinite H is the wrong point group, or the linear geometry is not possible for H2O by the help of group theory. That is another beautiful feature. Just for your information, I have put it here, right? I will not emphasize much on this. See, you know that H2O is V shape or angular, right? If someone will say no, H2O is linear, now you prove it that how come H2O is bent. So in that case, always remember, if H2O is bent, then the point group will be C2V. If H2O is linear, then point group should be d infinite H. तो आप क्या करेंगे? सेम प्रैक्टिस. डी इनफाइनाइट एच के लिए एमओटी अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले दो चीजें, क्या, एक सेंट्रल एटम क्या है और एक पेरिफेरल एटम क्या है, वो तो सेम रहेगा. अब यहां पर एच के रिस्पेक्ट में आप एटम के रिस्पेक्ट में इन सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे क्या चेंज हो रहा है. मैंने पहले से किया है. इफ यू विल सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू गेट इट सिग्मा जी प्लस सिग्मा यू प्लस, राइट. अब देखिए, ये तो सेम रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है. दो ही पॉसिबल है, कि ये एक ये. अब यहां पर दो ही चीजें थी, सिग्मा जी प्लस सिग्मा यू. अभी सिग्मा जी सिग्मा यू को आप जब पॉइंट ग्रुप देखेंगे डी इनफाइनाइट एस, तो उसके राइट कॉर्नर पे देखेंगे कि ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो इन दैट केस इट विल बिकम 2s एंड 2pz. ये तो देखिए नॉन बॉन्डिंग हो गया ना, क्योंकि इनके सामने तो कोई ऑर्बिटल है नहीं. तो 2pz ऐसे कंबाइन हो सकता है और 2s ऐसे कंबाइन हो सकता है. अब देखिए इसके एमओटी मैंने बना दी सीधे. अगर आप एमओटी बना रहे हैं तो आप देखिए सिंपल, ये आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर नाउ? नाउ इफ यू विल सी, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 by 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बॉन्डिंग and number of electron present in a non-bonding. So bonding electron के